Assalamu alaikum. I hope you are all doing fine. So now we will be talking about some of the uh, filtering types. We have already discussed in detail about the rectifiers, half wave rectifiers और उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस किए हैं कि उन्हें कैसे मेजर किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर if we have any type of topology of rectifier, whether based on half wave rectifier, full wave, 6 pulse, 12 pulse, or some complex topologies. So which one will we be selecting for our particular application? तो इन चीज़ों के साथ ही एसोसिएटेड है ये डिस्कशन ऑफ टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एंड द रिक्वायरमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिल्टर्स। तो अब हमारा ज़्यादा फोकस फिल्टरिंग की तरफ होगा कि ये क्या है, इनके कैसे ऑपरेशन है और इनके कुछ डिज़ाइंस को देखा जाएगा। But before going into the detail of our the need of filters और क्या है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन या इंडिविजुअल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है, इन टर्मिनोलॉजीज को देखने से पहले हम ज़रा ब्रीफली इनका बैकग्राउंड देखते हैं। विद टाइम हमारे पास जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एंड स्पेशली इन द 21st century वेयर these greenhouse emissions and the global warming is a major issue, और जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, they are trying to find a way to minimize their wastes, whether we talk about in terms of greenhouse gases emissions that are burned from the that arise from the burning of fossil fuels for power production or for the transport purposes or for some other domestic uses. So major trend is upon finding the energy alternative ways by which we can decrease this concentration of carbon dioxide in our atmosphere, and we can limit the damages done to the environment. However, the damages that we have done so far, they are very difficult कि उनके जो हम impacts हैं उनको reverse किया जाए, but at least we can try to put a full stop on them to making in order to make some more damages to the environment. So here is where हमारे पास रोल आता है of renewable energy systems का, और renewable energy resources में हमारे पास एक major contributor है और major application है of power electronic devices, ठीक है, जिसमें चाहे हम बात करें विंड की, सोलर की, ठीक है, गैस फ्यूल्स वगैरह की बात की जाए, तो इन तमाम के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन है वो यूजुअली डीसी में की जाए, हमारी कोशिश होती है कि डीसी में की जाए, या अगर कोई सोर्स है भी ऐसा कि उसे एसी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी पावर को पहले डीसी में कन्वर्ट किया जाए और फिर आगे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। तो इस तमाम कन्वर्जन के लिए फ्रॉम एसी टू डीसी या कुछ सोर्सेज जिसमें डायरेक्टली जनरेशन ही डीसी में होगी, तो वहाँ पर हमारे पास these electronic devices they will be unavoidable. So that's why we have seen a major rise in the uh, popularity and the usage of these electrical devices, power electronic devices, that includes rectifiers mainly, and some switching devices, MOSFETs, thyristor, BJTs, transistors, and so on. And in addition to that, since we are talking about the limitation of the use of the fossil fuels, and ultimately they will be running out in next 50 to 60 years. So again, it is our, basically we have no escape or no other alternative
other than going towards these renewable energy resources. So at one end we are trying to limit them to extend their life. Secondly, we want to have a better and clean environment, and additionally जो हमारे पास लिमिट करें इनको by moving our productions, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जो फॉसिल फ्यूल के थ्रू हो रही है उनको डिस्करेज करके हम जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और सेकेंडली जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाली हमारी ट्रांसपोर्ट मीडियम है और डोमेस्टिक यूजेस, वी आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स, वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अगेन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास या इलेक्ट्रिक हमारे पास हीटिंग है फॉर और डोमेस्टिक पर्पसेस, उनको यूज कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स आर इन टेस्टिंग फेजेस, और कुछ कंट्रीज में तो काफ़ी एडवांस लेवल पे भी पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो हाइब्रिड कार्स हैं हमारे पास काफ़ी दूसरे कंट्रीज में टेस्ला वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो वो काफ़ी एफिशिएंट हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं, तो हर कंट्री को अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। मे बी विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी वो हमारे पास बेटर हो जाए। ठीक है, और अल्टीमेटली जो ओवरऑल वर्ल्ड शिफ्ट टुवर्ड्स देम। तो इसके लिए हमारे पास माइक्रोग्रिड्स का कॉन्सेप्ट आता है कि इंस्टेड ऑफ large generating stations that are powered by fossil fuels or similar type of fuels, तो छोटे छोटे हमारे पास लोकलाइज जनरेटिंग स्टेशंस हों, ठीक है, और वो हमारे पास सप्लाई करें पावर टू द रिक्वायर्ड एरियाज। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिशन की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और काफ़ी सारे फायदे हो जाते हैं। ठीक है, बट देयर आर सम इश्यूज एसोसिएटेड विद माइक्रोग्रिड्स एज वेल, कि इट सीम्स रियली ग्रेट कि हमारे पास ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो रही है, लेकिन व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड विद द कन्वेंशनल सिस्टम एंड ग्रिड्स तो बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं related to protection, safety. So that is another debate, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम एक मोटिवेशन है कि why we are moving towards why the popularity of these electronic converters or rectifiers that has increased। और secondly हमारे पास एक major load of the modern era, that is, चाहे वो बात करें हम अपने इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल सोर्सेज की, वेरिएबल स्पीड फैंस की, पंप्स की, इलेक्ट्रिकल होम एप्लीकेशंस की, कंप्यूटर चार्जर्स की, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स की, तो इन तमाम में, या यूपीएस हमारे पास, इन तमाम को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ हार्मोनिक्स। तो जहाँ पर इस तरह के हमारे पास लोड्स की पॉपुलैरिटी, या इन रेक्टिफायर्स और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की पॉपुलैरिटी और डिमांड that has increased, that has peaked, it arises certain issues in our overall power system, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे करंट और वोल्टेज हार्मोनिक्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ओवरऑल पावर क्वालिटी that is disturbed and it becomes very poor due to these harmonics। हमारे पास जो वोल्टेज डिस्टॉर्शंस होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं अपने हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, और पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम becomes very poor, which means कि ओवरऑल हमारे सिस्टम की जो कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी टू डिलीवर real power, that will be greatly affected and that will be much reduced than they were originally intended to have, due to poor power factor that is caused by these harmonics। आपके जो ट्रांसफार्मर्स होंगे उनकी काफ़ी पुअर कंडीशन होगी, आपके जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं उनकी काफ़ी पुअर कंडीशन होगी। ठीक है, जो उनकी कैपेबिलिटी थी कि रियल पावर वो ट्रांसमिट करते हैं, अब वो उससे
60% 70% पे ऑपरेट करेंगे, या इवन इससे भी वर्स स्टेट्स हमारे पास हो सकती हैं, उनके ऊपर वो पावर डिलीवर कर रहे होंगे। तो ये these things they cause unnecessary stresses and losses in our system. We need to cater these problems as well. और ये हमारे पास इसलिए हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट जो हमारे पास मेजर गवर्निंग बॉडीज हैं उन्होंने किए हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिकल के लिए मेजर हमारे पास स्टैंडर्ड्स IEEE पब्लिश करता है, डिसाइड करता है। तो इसी तरह से जो ये जो प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक्स और पावर फैक्टर की पुअर होने की वजह से, ड्यू टू हार्मोनिक्स इन आवर सिस्टम that has arisen in our system due to non-linear loads such as rectifiers and some electrical power electronic converters. तो इनको लिमिट करने के लिए इन द लेट 70s और अर्ली 80s में हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया IEEE 519। तो उन्होंने ओवरऑल सिस्टम की THD के ऊपर भी लिमिट डिफाइन की हुई है कि इस वोल्टेज लेवल के लिए मैक्सिमम इतनी THD अलाउ होगी। और एडिशनली इंडिविजुअल हार्मोनिक्स पे भी उन्होंने लिमिट लगाई हुई है। इसको हम बाद में ज़रा देखते भी आगे अपनी फॉरवर्ड अपकमिंग स्लाइड्स में। ठीक, तो अच्छा हम बात करते हैं IEEE 519 स्टैंडर्ड की। तो ये इसकी डिफरेंट वर्जन्स हैं दैट कीप्स ऑन अपडेटिंग विद टाइम। ठीक है, इसके IEEE 519 1992 के नाम से भी एक स्टैंडर्ड है। तो उसी का अपडेटेड वर्जन है 2014। और इस 2014 के फिर मल्टीपल वर्जन्स हैं, तो उसमें कुछ माइनर चेंजेस होती रहती हैं विद टाइम। So in order to cater the problem of these harmonics, so that they can be captured, they can be trapped somehow, or their strength could be minimized or eliminated completely ideally. For this purpose, we use different type of filters at the front end of these rectifiers, so that these standards may be fulfilled. हम बात करते हैं पावर क्वालिटी की। तो सॉरी, हमारे पास जो पावर क्वालिटी है इसमें डिफरेंट इश्यूज अराइज हो सकते हैं दैट आर ऑफ अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। द सिस्टम की जो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं उससे ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज। ठीक है, ये सैग स्वेल कहते हैं इसको, या पावर स्विंग। ये हमारे सिस्टम में फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 20 to 30 मिलीसेकेंड टू 1 सेकेंड तक ये पावर स्विंग राइज होते हैं, जिसमें आपके पास RMS value of your current or voltage that keeps on increasing for that particular time। तो ये भी हमारे सिस्टम में कुछ अनस्टेबिलिटीज कॉज करते हैं। सर्जेस और स्पाइक्स, वेदर अंडर शूट्स और ओवर शूट्स की बात की जाए, तो ये सर्जेस, स्पाइक्स और इम्पल्सेस, इसकी वजह से भी हमारी इंसुलेशन के डैमेज होने का खतरा है। ओवरऑल अगेन सिस्टम की जो क्वालिटी है इट विल बिकम पुअर। आउटेजेस ऑब्वियसली, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू फॉल्ट्स। ठीक है, हमारी जो कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट शुड बी इंश्योर्ड। सम इलेक्ट्रिकल नॉइजेस कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल केबल्स के सराउंडिंग में कोई और ऐसे टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसी वजह से हो, वो नॉइस क्रिएट करे आपके सिस्टम में, तो इससे भी आपकी जो पावर क्वालिटी है दैट कैन बी affected। and then this one problem हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, कि जिससे बेसिकली हमारी जो साइन वेव है उसकी शेप चेंज होती है। तो साइन वेव is very beautiful to draw and it looks very easy के बड़ा अच्छी ज़बरदस्त है, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ very difficult to achieve a pure sinusoid wave
इवन जो इसको प्योर जनरेटर्स होते हैं ऑफ साइन वेव, दे आल्सो हैव सम नॉन आइडियलिटी, और वो भी इवन परफेक्ट आपके पास साइनोसाइड नहीं जनरेट करा सकते हैं। तो ड्यू टू चेंज इन द शेप आपके पास जो इम्पैक्ट होता है वो ड्यू टू द चेंज इन शेप ऑफ दिस साइनोसाइडल वेव आगे डिफरेंट हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं अपने सिस्टम में। तो ये अगेन आपके पास पुअर क्वालिटी की तरफ लेके जाते हैं आपके सिस्टम को, और इनका इम्पैक्ट हमने देखा है कि पावर फैक्टर पे होगा, और पावर फैक्टर पर किस तरह से हमारे सिस्टम की कैपेसिटी केवीएस उनको इम्पेक्ट करेगा, किलोवाट रेटिंग जो है उनकी कैपेसिटी को कैसे इफेक्ट करेगा, ये चीज़ हमने देख ली। और हमने फिर डिस्कस किया कि इसके लिए फिर हम फिल्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और certain devices they are very sensitive to these distortions, these harmonic distortions, or they can either maloperate or can even damage if these standards are defined by IEEE, they are not followed or by that particular manufacturer of that device. For example, we have been working on plasma torch. Uh, uh, we are working with National Tokamak Fusion Program, तो वहाँ पर ये एक है आपके पास प्लाज्मा टॉर्च, उसके लिए पावर सप्लाईज बना रहे हैं that has rating of roughly 40 किलोवाट। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस डिफाइन की हुई है कि 95% से अबव पावर फैक्टर हो, 3% से लेस टीएचडी हो, तो उनको हर हाल में मीट करना है, अदरवाइज दैट वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस इट विल बी डैमेज्ड। और वो जो डिवाइस है प्लाज्मा टॉर्च दैट इज बेसिकली यूज्ड टू burn or to dissipate the nuclear waste that are generated during some of the nuclear reactions. तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल इसलिए मेरे जहन में कि इस पे रिसेंटली काम कर रहे हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और बहुत सारे सेंसिटिव सिस्टम होते हैं जहाँ पर इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस और जो आपके पास एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो हर तरह से यू हैव टू मेक श्योर के जो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं, जो रूल रेगुलेशंस, उनको फॉलो किया जाए। सो इन ऑर्डर टू बेस्ड ऑन दिस discussion move toward we are now close towards understanding the harmonics, and to have a better understanding we need to review some of the mathematical functions of periodic functions. In your lower classes you have studied signal system theory, communication system, and similar subjects where you have done the Fourier analysis in, you've studied Fourier analysis in very detail, and you have, you know that के आपके पास कोई भी जो periodic function है, it can be represented in terms of only sinusoids and sinusoid functions and cosine functions। तो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उसी को लेकर हम यहाँ पर आगे will proceed forward. If you consider that you have fundamental frequency of 60 hertz, तो जो जितने भी उस फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स होंगे that will be known as their harmonics। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अवर लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो जो आपके पास वोल्टेज आ रही है साइनोसाइडल या करंट जो बेसिकली आप या कोई लोड है आपके पास उसको यूज कर रहे हैं आप, उसमें से अगर साइनोसाइडल वोल्टेज और साइनोसाइडल करंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी अगर आप एक साइकिल लें या नंबर ऑफ साइकिल्स लें और उसकी शेप क्लोजली एनालाइज करें, एंड
यू सी और यू फाइंड आउट कि आपके पास जो इसकी एग्जैक्ट वेव फॉर्म है वो दैट इज नॉट प्योर साइनोसाइडल, तो आपका जहन क्लिक करना चाहिए इस बात की तरफ कि इट मींस इट हैज सर्टेन हार्मोनिक्स। और अगर उनका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, उनका फोरियर एनालिसिस करेंगे और वी विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट, सो वी विल फाइंड आउट कि इसके अंदर सिर्फ 50 हर्ट्ज का ही सिग्नल नहीं आ रहा जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें और भी हो सकता है कि इसके बहुत सारे मल्टीपल्स आ रहे हो, 100 हर्ट्ज का, 150 हर्ट्ज का, 200 हर्ट्ज का, 250 हर्ट्ज का, 300 एंड सो ऑन, यानी कि 50 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी के उसमें 50 के तमाम मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, कुछ हो सकते हैं मे बी 50 हर्ट्ज है तो नेक्स्ट जो है ना 100 200 ना हो, इससे आगे के कोई हार्मोनिक्स उसमें आए हो। तो बहरहाल जो भी मल्टीपल होगा 50 हर्ट्ज का आपके पास, तो दैट विल बी नोन एज हार्मोनिक। और पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास हम इस तरह से करते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आफ्टर विच इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो अब इस फंक्शन को कंसिडर करें, जो मैथमेटिकल फंक्शन है आपके पास एक एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इन बाई टू। ठीक है, और कुछ बहुत सारी कॉस्ट टर्म्स एंड देन सम साइन टर्म्स। तो ये आपके पास एक फंक्शन आ गया। ये आपको पता है कि दिस इज योर डीसी टर्म, here you have these cosine terms and then you have your sine terms, where omega is the frequency, angular frequency, omega is equal to 2 pi f। ठीक है, और ये आप अगर देखें तो ये इसके मल्टीपल्स हैं कोसाइन के, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा एंड अप टू सोन। ठीक है, एंड देन साइन कंपोनेंट उसका फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है, उसका सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट एंड अप टू सो ऑन। तो अगर इन कोफिशिएंट्स, फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हमारे पास जो होते हैं ए एन और बी एन, ये होते हैं और दे कैन बी डिटरमिन्ड एज दिस। इसको ए एन कंपोनेंट्स के लिए इसको डिटरमिन करने के लिए you do this, that you integrate this over one time period by multiplying that function with the cos of n omega t, and for finding this bn coefficient, you multiply the function with the sine of n omega t and integrate it over the one time period। तो इस तरह से आपके पास ए एंड बी एन कंपोनेंट्स आ जाते हैं और आप इसकी एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, तो वो आप बेसिकली एक्सप्रेस कर देते हैं अपने किसी भी फंक्शन को, किसी भी शेप को इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। तो वहाँ से फिर इसके हम बेसिक कंपोनेंट्स ब्रेक करके हर एक की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ देख सकते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और टीएचडी में टीएचडी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फार्मूलाज हम आगे आके अभी एज वी विल प्रोसीड तो उन्हें भी हम देखेंगे। under special circumstances, for जो intuition methods के साथ और जो different well known facts हैं based on the symmetries or some properties that the function might follow, we can simplify these functions as well, or we can have an idea of अबाउट दिस के किसी पर्टिकुलर अगर आपके पास शेप है तो उसमें से किस किस्म के हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इवन कर रहे होंगे, ओड कर रहे होंगे, डीसी कंपोनेंट होगा ही नहीं होगा। तो ये रफली शॉर्टली बस रिव्यू कर लेते हैं इसको कि अगर ए नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स कि आपकी उस फंक्शन में कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, एंड इट हैपेंस व्हेन योर जो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इवन सिमेट्री है, इन दैट केस, या अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी जो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है, इस केस में आपके पास सिर्फ कोसाइन टर्म्स होंगी
और अगर odd symmetry है, in that case you have only sines. और इसी तरह की काफी सारी आपने और भी देखी हुई है प्रॉपर्टीज. अगर हाफ वेव सिमेट्री होगी तो इन दैट केस देयर विल बी नो इवन हार्मोनिक्स. कॉस टर्म्स भी होंगी, साइन टर्म्स भी होंगी, बट सिर्फ उनके जो इवन हार्मोनिक्स हैं 2 ओमेगा, 4 ओमेगा, 6 ओमेगा अप टू सो ऑन, they will not be present in your system. Or mathematically they as represented over here that f of t plus t half is equal to minus f t. So in this case there will be no even harmonics. So these are some of the waveforms shown over here, and based on the 3-4 properties that we have discussed, we can say that either this will be having some DC component or not. For example, in this case, the average value is 0. So this DC component A naught, this coefficient is 0. Then it has only sine components. It is an odd wave, so therefore it has only sine components and it has no even harmonics. Similarly, this B1, it has, if you look at it, neither it is even nor odd function, and additionally its average value, it's a step up ramp type function or a sawtooth function, and nothing is below this 0 line. Therefore the average value of this function is not 0. So we can say that it will be obviously having some DC component, and it has both the sine and cosine, and have both even and odd harmonic. Sorry, because it is following neither of the property. Then you have another one over here, and so you see, you get the point that given the type of shape of your waveform, you can at least have an idea of the overall picture कि इसमें कोई DC component होगा या नहीं होगा, इसमें lower harmonics में भी ज़्यादा कौन से हार्मोनिक्स हैं, इवन हार्मोनिक्स हैं या ऑड हार्मोनिक्स हैं. बेस्ड ऑन दैट you will come up with strategies, or you will spend your resources to suppress only those harmonics. So this can be useful.